सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे इफेक्टिव प्रिपरेशन के बारे में एक डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी एंड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे द टॉपिक ऑफ कंसर्न इज सॉरी इफेक्टिव प्रिपरेशन। तो आपने इसमें सुना होगा प्रिपरेशन, बट ये इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या है? तो इसको समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। अपने आप से पूछें कि कल आपने कितने पेजेस पढ़े हैं और उन पेजेस में आपने क्या क्या पढ़ा है। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ योर माइंड एंड सिस्टम। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगा होगा कल आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपने पढ़े और आप कलेक्ट कर पा रहे होंगे और अपने में थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। तो अब अपने आप से पूछें कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको याद आ रही है ये कैसे, हाउ इट वर्क आउट, और कितना इफेक्टिवली आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर स्टडीज की बात करें, इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन विद इन योर माइंड एंड सिस्टम, पॉइंट नंबर 1, एंड इट्स रिट्रीवल एज एंड व्हेन नीडेड। सो जो बेसिक मैकेनिज्म है स्टडीज का वो है कि हम किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हमारे माइंड एंड सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए और हम उसको यूज़ करने में कैपेबल हो। दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टडी। आप सोचें कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप कैसे जज करेंगे कि ये पढ़ा लिखा है? आप उससे क्वेश्चन आंसर सेशन पूछेंगे। पढ़े लिखे की पहचान है कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है पैटर्न्स की फॉर्म में। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन वाले पैटर्न को रिटेन करने में सक्षम होता है, बता पाता है, लोगों को वो चीज़ मेस्मराइजिंग लगती है। बट इसका अगर हम एनालिसिस करें, सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द माइंड एंड सिस्टम ऑफ अ स्टूडेंट और अ पर्सन हु इज स्टडीइंग। तो यहाँ पे जो बेसिक मैकेनिज्म है स्टडीज का वो है माइंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन एंड इट्स वर्किंग एज अ सिस्टम एंड वेरियस प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड बाय द माइंड ब्रेन सिस्टम। सो यहाँ पे इफेक्टिव प्रिपरेशन में जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल रोल है, वो है आपके माइंड ब्रेन सिस्टम का। और जितना आपका माइंड ब्रेन सिस्टम इफेक्टिव होगा, जितना अच्छा उसका क्वालिटी होगा, जितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पे वो काम कर पाता होगा, जितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाता है, वहीं से आपका एक सर्टेन वैल्यू बनता है लाइफ में। सो इट्स अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ द माइंड ब्रेन सिस्टम, जिस पे आपसे बात करूंगा। सो माइंड ब्रेन में दो चीज़ें, माइंड एंड द ब्रेन। माइंड इज मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल इसको कह सकते हैं। एंड ब्रेन इज योर फिजिकल, या इसको न्यूरोलॉजिकल लेवल पे आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, दैट कोऑर्डिनेशन मेक्स समथिंग व्हिच आई कॉल एज द माइंड ब्रेन सिस्टम। तो सबसे इसमें रहस्यमय बात है कि मेटाफिजिकल और फिजिकल, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कहाँ होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि इसमें जो ब्रेन है रफली उसको अगर साइड से देखें तो ऐसा कुछ लगेगा। तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेन नाम की जो चीज़ है वो कहाँ है। यू कैन लोकेट दैट बिकॉज इट एग्जिस्ट फिजिकली। ब्रेन बताया जा सकता है, उसके अंदर नर्व सेल्स बताई जा सकते हैं, न्यूरॉन्स को आप बता सकते हैं कि न्यूरॉन्स यहाँ पर ऐसा है। लेकिन न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है, जो न्यूरॉन्स का पैटर्न है, वो हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग,
वो चीज़ सारी मेटाफिजिकल है, और मेटाफिजिकल डायमेंशन का पहला जो गेटवे है वो आपका माइंड है। अपने आप से पूछें, क्या बता सकते हो किसी को कि आपकी बॉडी में आपका माइंड कहाँ है? तो इट इज मेटाफिजिकल, यू कैन नॉट प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस बाय एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट। बहुत सूक्ष्म है, इट्स वेरी वेरी माइन्यूट। एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर ऐसे सोचें कि माइंड इतना छोटा है कि वो ब्रेन के लीस्ट काउंट से भी छोटा है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अंदर से पता है कि माइंड जैसी चीज़ होती है, वी फील इट। और हमारी लाइफ में जनरली जो भी काम हम करते हैं तो उसमें माइंड ही डोमिनेट करता है। अगर आपका मन है किसी काम को करने का, तो आप कितने भी और उसमें आए, यू विल बी एबल टू डू इट। आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, एक्सटर्नल सिचुएशन से हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी काम को करने का मन नहीं है, तो कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, कितना भी आपको मोटिवेशन लेक्चर दे, आप काम नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट है और टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, इससे लाइफ में कुछ अचीव होगा। तो बच्चे इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं उसको, क्योंकि मन जब तक नहीं सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। उन्हीं बच्चों को अगर मूवी दिखा लो, आप 50 मूवी दिखा लीजिए, हर एक बच्चे को हर मूवी याद रहेगी। और हर बच्चे को आपने जो पढ़ाया उसमें से बहुत कम बच्चे जिनको याद रहेगा कि मैंने पढ़ा क्या था। सो व्हाई दिस डिफरेंस? माइंड ब्रेन तो वही है, ब्रेन वही है बच्चों का, पढ़ने में भी वही है, मूवी देखने में भी वही है, तो मूवी कैसे अपने आप याद हो जाती है? तो इसमें छिपे हुए रहस्य में यहाँ है मन। और मन की जो प्रकृति है, जो उसकी नेचर है, वो है वेरिएशन, चंचलता। वो स्थिर नहीं रहता, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए। इट्स ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग। तो आप ऐसे मानिए कि मन हमेशा वो देखता है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, और यही सब दुखों का कारण है। क्योंकि कोई चीज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, बट जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? तो मान लीजिए कि आपको चोट लग गई, तो उसका इलाज है, आप हाथ पे चोट लगी तो उस पर आप इलाज कर सकते हैं, उसका दवाई लगा सकते हैं, मलहम लगा सकते हैं। लेकिन जो माइंड के दुख हैं, आप मान लीजिए अनावश्यक रूप से परेशान है, एंजाइटी प्रॉब्लम है आपको, डिप्रेशन है, ये जो दुख है किसी चीज़ को लेके, अपसेट है आप, तो इसका कोई फिजिकल कारण नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जो मन के भी परे है, जो मन से भी सूक्ष्म है, जो मन को नियंत्रण कर सकता है, या एक तरीके से कहें कि उसको मैनेज कर सकता है। और वहीं से कॉन्शियसनेस या हायर डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो 7 बॉडीज होती हैं। ये जो हम देखते हैं, पहला ये तो फिजिकल बॉडी है, सेकंड होता है इमोशनल बॉडी, जहाँ मन, विचार, भावनाएं होती है। थर्ड इंटेलेक्चुअल बॉडी, फोर्थ क्रिएटिव बॉडी, फिफ्थ पे आत्मा, सिक्स्थ पे आप कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और सेवेंथ जो लेयर है उसमें परब्रह्म आ जाता है। तो कोई भी इंसान, उसको दिखता है आपको उसकी फिजिकल बॉडी है, लेकिन उसके साथ कंसेंट्रिक फॉर्म में 7 बॉडीज होती है। आप ऐसे मान के चलें कि ये फिजिकल, उसके बाद इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, और लास्ट में परब्रह्म फॉर्म। तो ये आप सोच के चलें कि 7 स्टेजेस का एक वीडियो गेम है लाइफ। और इसमें क्या है, जाना सबको ऐसे ही है। तो एक हायर लेवल का जो बॉडी है वो सर्टेनली लोअर लेवल को डोमिनेट करता है। आपने देखा होगा, यदि आपका मन खुश नहीं है तो फिजिकल लेवल की कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिजिकल लेवल पे आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मन खुश नहीं है तो आपको अटपटा सा फील होगा, ऐसा लगेगा अंदर से कुछ हो नहीं पा रहा है, देयर आर नो बेनिफिट्स। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मैंने लाइफ को समझा है, आपके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं, चीज़ें लगातार चेंज हो रही, अपडेट हो रही है, एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज इन सर्च ऑफ समथिंग, और वो समथिंग है बेटरमेंट। हर कोई बेटर बनना चाहता है। जो साइकिल वाला है वो सोचता है मैं बाइक ले लूँ, बाइक वाला इस तरकीब में है कि मैं कार ले लूँ, कार जिसके पास छोटी है वो इस फिराक में है कि मैं बड़ी कार ले लूँ। तो अंदर से हर ह्यूमन बीइंग बेटरमेंट चाहता है। आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड से हो, यू मे बी अ बेगर सर्चिंग फॉर फूड, और यू मे बी एल्बर्ट आइंस्टीन, और निकोला टेस्ला,
or Elon Musk or Mark Zuckerberg. You can be anything. But one thing is sure, that the purpose behind your existence is betterment. Everybody is in search of better aspects of life. So this is phenomenal, this is substantial, and it pervades all aspects of life. So in a nutshell, we can say that there is a system. Things are working in an automatic way. It's not controlled by your thoughts, your emotions, your feelings. There exists something which is controlling everything. There is a system of working. There is something which is in control of everything. And there are certain rules. There are quantized rules to do things. And things will happen in their own way. You cannot manually control them out. So universe is itself a system. It can be thought of as the brain of the god or brain of something. And it is being guided by rigid rules, the rigid protocols. You cannot change the rules. You can only feel the rules. You can only decode the rules, or it's like you can decode the pattern. Entire universe is following certain patterns. You don't have the guts to change the patterns. You can only analyze the patterns and use them for your benefit. So it's as simple as that. So I was just discussing about the mind and brain, but for explaining mind, for elaborating mind, that what are the higher dimensions, what are things which are even beyond mind, I need to use this example. So if you want to raise yourself above the mind, then you have to raise your frequencies above the mind. And one more interesting thing आपसे बात करूँगा, आपको जो फील होता है, it is because of the frequency of your brain waves. आपने देखा होगा कि ब्रेन एक चीज़ है, माइंड एक चीज़ है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं. माइंड ब्रेन से इंटरेक्ट करता है टू डू सर्टेन थिंग्स, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है टेक्स प्लेस वाई द ब्रेन वेव्स, जिसका एग्जिस्टेंस ईईजी के थ्रू आप देख सकते हैं. साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज हुआ है कई बार कि हमारे ब्रेन वेव्स को 5 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा. इसमें जो थीटा ब्रेन वेव्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं, व्हेन वी आर फुली अनकॉन्शियस, ऐसा आप मान लीजिए. देन ब्रेन वेव्स आर हैविंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी. और जब हम हाईली एनलाइटेंड होते हैं, व्हेन वी बिकम थॉटलेस एंड हाईली अवेयर ऑफ द सिचुएशंस, हाईली कॉन्शियस, इन हाईली मेडिटेटिव स्टेट्स, तब हमारे ब्रेन वेव्स गामा फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं एंड वी फील समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. लेकिन बीच में फ्रीक्वेंसीज चेंज होते रहते तो हमें मूड स्विंग्स होंगे, हमें अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कुछ चेंज हो रहा है. एंड यू नो, एक अजीब सी फीलिंग आपको होगी. लेकिन जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे ब्रेन वेव्स का, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी. आपको अच्छा लगेगा जब ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, लेकिन जब वो घटेगा तो उतना ही नेगेटिव आपको फील होगा. आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें करता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है बहुत जल्दी, उतनी जल्दी वो डिप्रेस भी हो जाएगा, क्योंकि वो साइकिल वही है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा. मैथमेटिकली बात करूँ, एक आम आदमी जो है उसका लाइफ साइकिल अगर देखें तो वो साइन और कॉस के कर्व में होता है, लिमिटेड. ये प्लस ये माइनस लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा वो अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव भी नहीं सोचेगा, तो उसके ब्रेन वेव्स दे आर लिमिटेड. वहीं पे अगर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति हैं उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो 10 का ग्राफ होता है, और 10 का ग्राफ माने प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी. अगर पॉजिटिव थॉट्स उसमें डोमिनेट करना है और एनर्जीज पॉजिटिव साइकिल में है, तो वो बहुत ही समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स करेगा, ऐसा कुछ जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, जस्ट लाइक निकोला टेस्ला और सर एल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. लेकिन अगर नेगेटिव में आएगा तो उतना ही नेगेटिव ही कर सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट द intensity. The first thing, positive and negative are the two dimensions of it, but first of all you need to have energy, an intensified energy to do something out of the box. Without energy you can talk big, but you cannot achieve big things, because energy is the fundamental factor which dominates everything. Everything is working because of energy. Energy is behind everything. Even forces which exist in nature are just the method, the mechanisms to transfer energy from one form to another. And the entire universe itself is a game of energy, or the vibration, or the frequency. As Sir Nikola Tesla said, if you want to understand the universe, think in terms of energy, frequency and the vibration.
So apply it on yourself. Your mind brain itself is a system. What you are feeling right now is because of frequency of the brain waves which connects mind and the brain. And you must have realized that you are within a loop. You are just within an algorithm. Whatever, and you are receiving information from the five senses and forming a pattern based on that information, and you are upgraded. Your software is being upgraded. You are learning new things based on the information that you receive. So right from the moment we are born, we receive information through the five senses, and there is something inside us which analyze those information, which form patterns, which learn things. Learning is about decoding the patterns that things happen in a certain way. So the entire mind brain system is working within you, and what you achieve in life is because of the efficiency of that mind brain system. And good thing is, efficiency can be improved. So if you want to know more about these things, I have compiled a book which is Life Beyond Information. It's available on Amazon, Flipkart and Ocean Press. You can search on it. You can even Google it out. So you'll find the links for the books. So two books I have published. First is Life Beyond Information, and the second one is Life Beyond Information Part 2, in which I have tried to connect science and mythology. I have tried to connect the string theory, theory of everything, and the concept of creation, the concept of Parbrahma. I have tried to interrelate the Vedas, Upanishads, and the string theory, the theory of everything. That when we start thinking, then at some point of time there is convergence between mythology and science, because science is about knowing things, religion is also about knowing things, mythology is also about knowing things, but its ways in form of stories, in form of something which cannot be explained scientifically, which cannot be explained using physical things. But same thing is with the deeper level of science. You see, whatever we talk, whatever we say, science is a collection of certain patterns. But the thing is that who made the patterns? Who made the laws? Who is it which is controlling everything? And how you know about that? So if we have the guts to think beyond the patterns, think beyond the information, then we'll certainly feel metaphysical involvements in what exists physically. Even if you see the structure of the atom, more than 99.99% space is empty. Ratio of nuclear and atomic radii is 10 to the power minus 5. Volume ratio is 10 to the power minus 50. Which proves that most of the space is empty. And what we know is just a minuscule of what exists. So what lies in that empty space? So I hope you are getting the point. So human consciousness is always in search of things which are beyond physical dimension. A normal human being is just looking for survival. But if you are above the physical level, then you are searching for the metaphysical dimensions of life, and mind is the first level of metaphysical dimension. There exist things beyond mind, but for that you have to adjust your brainwave frequencies, and that will give you trouble, that will cost you out, because in universe nothing is free of cost. If you want to know something out of the box, you will have to bear the brunt of painful things. You have to bear the brunt of pain to pay for the knowledge that you want to acquire. As simple as that. So concluding, things, there is a concept of mind and brain and their coordination which enables you to perform effective preparation. I elaborated in so much detail so that you can analyze that how complex the topic is. And most complex thing is how to control mind. And to know how to control mind, you have to look for something which is beyond mind itself. Because mind is the first level of metaphysical dimension. There exists higher level of consciousness, higher brainwave frequencies, by virtue of which you can observe the mind itself. So, to enter into those dimensions, first of all, observe things silently, observe yourself, your thoughts, your emotions, without reacting. But that will take you certain time, that will take you some time to reach into that state, because by default we are forced to react to our emotions or thoughts. Being thoughtless is a very
You can say that it's a very rare state of mind when you observe everything with a silent mind. And this gives us a hint that the fundamental source of laws or fundamental source of mythology or any religion is by the people who were able to enter into that state of mind in which they observe things silently without reacting, without any reaction. And when you are beyond your own emotions, you are beyond traps of your own mind built system, only then you will see the truth. But generally, we are trapped in our own illusions, in our own mind-brain system, in the matrix, in the information system, prepared by our own mind-brain system. So it takes a lot of guts to think beyond your own mind-brain system and to feel things happening in the universe. If you want to know more about it, how to optimize your mind-brain system, I have compiled a book with the name OST. You can search it on Google, OST by Acharya Vishvendra, and can have insight to the deeper dimensions of mind and brain as a system. Now let's move back to the topic. We were discussing about effective preparation. So effective preparation involves mind-brain system. I explored the way that how mind is there and what things exist beyond the mind. So right now your analytical brain must be trying to contemplate me out, but analytical brain is not capable to explain metaphysical things. You have to enter into higher dimensions. You have to enter into higher dimensions which are beyond analytical skills, analytical brain. Because if you want to know something, then first thing is you have to enter into unknown dimensions. Analytical brain, its task is to put you in a boundary so that you are trapped within a system. But you can do anything, but if you want to know something new, you have to break that boundary, and that will give you pain. But the task of analytical brain is to make you survive. It will oppose anything that troubles you, that gives pain to you. So it's up to you that whether you want to be limited or whether you want to be, trapped in a thoughts, in a thinking process, or whether you want to decode the correct frequencies to access information from higher dimension. So the universe is quantized. To know something, there is a certain specific frequency which is the basis of quantum physics. Things are taking place at quantum level. Quantum means nothing is continuous. There are certain discrete frequencies which are needed to move from state A to state B, just like we have in Bohr's model. There are certain specific frequencies which the substance or the gas or the atoms will absorb. They will reject any frequency. They respond to only certain specific frequency. So this specification is the very foundation of quantum physics. So just analyze your mind-brain system, just work on the frequencies of the mind-brain system, and you will know everything, given that you can decode the correct frequencies. So the effective preparation lies in decoding the correct frequencies. So if you are preparing for JEE and NEET, first of all, decode the frequencies needed to crack competitive exams. Go through PYQs, try to solve questions and see how your mind-brain system works. Face the anxiety, face the depression, face the negative feelings, because these are a symptom that your mind-brain system is developing, your frequencies are developing, and you are learning the art of manipulation of the frequencies. And this art of brainwave frequency modulation is the very basis to crack JEE and NEET. You see, brain has got different parts, different lobes, the frontal lobe, the temporal, the parietal, and the occipital. And different functions are executed by the brain using different parts. But here is the question, that who will tell the brain that which part is to be activated? So it's through the mind. So this mind coordinates with the brain through the brain waves, and it tells the brain that this specific part is to be activated. For example, when you analyze something, frontal part of the brain is active. It can be shown by experiments that neural activity will increase in your frontal lobe. So that can be experimentally proved. If you learn something, if you remember something, if you try to recall memories, then occipital lobe is used if you are trying to recall the visual memory. Parietal lobe for integrated memory, and temporal lobe for auditory memory. So there is an entire system working within you, but it works with specific frequencies.
And the concept of effective preparation deals with knowing that which frequency activates which part of the brain. And there is a pattern for that. For example, roughly the structure of the brain can be like this. And when you do something, there is a neural activity in different parts of the brain, and there is a certain pattern formation. Suppose this is a pattern. And when you know the pattern, when you repeat the pattern, then you are said that you learned something. So important thing here is the pattern formation, its storage in the mind, and its retrieval as and when needed. So talking more specifically, effective preparation involves forming the neural patterns, their storage in the mind, and storage at the three levels: conscious, subconscious, and unconscious level. And the most important thing, its retention as and when needed. In JEE and NEET, there are about 6,000 A4 size pages. Exam comes from 25 to 30 pages. So out of 200 pages that you learn, only one page is important. Probability is 0.5%. So that is, as simple as that. So it's all about the neural retention, the retention of the neural patterns which you learned during 2 years of extensive preparation, although it includes learning from as small as when you were in class 5. But most of the learning is concerned with class 11th and class 12th. So effective preparations means learning the effective neural patterns and specifically retention of the neural pattern from mind to the brain and its use as and when needed. So for knowing more, you can refer to my book OST by Acharya Vishvendra. There is a book on Amazon, Flipkart and Ocean Press. There are my YouTube videos also, OST by Acharya Vishvendra. You can search out them and can learn the process of effective learning. There is also another video on effective preparation. So you can also see that, where I have discussed the mind brain as a system, their coordination, how it works in a more specific and scientific way. This video is a bit, it's a bit of motivational video. So I'm not being specific to the technicalities over here. So you can use that and you can optimize your time and energy for this. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.